So, with this brief introduction, I welcome Sachin sir, uh, and I will request sir to continue with the session. So, thank you. Our session will be ending at 11 o'clock. And if you are having any queries, so please write down from 10:45. So, last 15 minutes, just type your queries, and exactly 10 minutes before we'll stop the session and we'll discuss on your questions. So thank you very much. I got a lot of queries. The students are ready to join Sachin sir course, and Sachin sir will be sharing his contact details. So during this session also. So thank you, sir. Please continue. Yes, sir. Good morning, sir. Thank you very much. Good morning to all. Please let me know once. Am I audible? Please let me know once. Am I audible? Please let me know once. Am I audible? Uh, If yes, sir. We can hear you. Yeah, Bakshi Abdul yeah, Rahman. okay. Then we'll continue. So in the last session, we have seen how to start your preparation, how to study. In the last session, we have seen how to start, how to prepare, which subject you have to choose first, how to study MCQs. Okay. Now in this session, that is a part 3 of your GPAT preparation. In this part, we will see subject-wise important topics and points for your GPAT NIPER 2023-24. So for every kind of exams, which are the major subjects, which are the major topics under each subject, what are the important points under each topic. So we are going to highlight on these parts. So again, we'll start. Suppose actually it is. So your GPAT paper has a 5 sections. First section will be a chemistry section. Second will be a sutic section. Third will be a pharmacology section. Fourth, fourth section will be a pharmacognosy section. Fifth section will be a other subjects like. So they are going to ask you 38 questions from chemistry part. You know that very well. They are going to ask you 38 questions from sutics part. They are going to ask you 28 questions from pharmacology part. They are going to ask you 10 questions from pharmacognosy part. They are going to ask you 11 questions from other subject. You know this very well. Okay? Now, suppose that pharmaceutics means what? So you know that they are going to ask you 38 questions from pharmaceutics. But pharmaceutics is not only one subject. It is composed of different subjects. Okay? So in the pharmaceutics, you are going to have questions from pharmaceutical engineering, pharmaceutical engineering, then physical pharmacy, then dispensing pharmacy, then industrial pharmacy, and biopharmacy. So basically, pharmaceutics means what? It is composed of these 5 subjects. So all 38 questions will be divided into these 5 subjects. So they are going to ask you 38 questions from these subjects, not only from industrial pharmacy. So a lot of students again they used to ask me, sir, industrial pharmacy is a major one, and can we skip other minor subjects? So you don't have to skip anything. You have to prepare all, everything. You have to prepare everything. So सुटिक्स में से 38 क्वेश्चन जो है वो डिवाइड किए जाते हैं आपके. सो एज पर एनटीए उन्होंने सिर्फ बोला है कि 38 क्वेश्चन आएंगे आपके फार्मास्यूटिक्स में से, बट दे हैव नॉट गिवन they have not given the individual subjects weightage. But as per the my experience, as per uh, as as I used to analyze a lot of papers, so I have found that they are going to ask you particular number of questions from particular number of subjects. So suppose that your pharmaceutics part. So in that they are going to ask you around 15 questions. They are going to ask you around 15 questions from industrial purpose. So these 15 or 16 questions they are from industrial pharmacy. You have to read your IP part or you have to read your industrial pharmacy part from this book. Okay.
You have to read from this book. So this is known as a Industrial Pharmacy by Leon Lackman. Theory and Practice of Industrial Pharmacy by Leon Lackman. So these are the topics which are very very important for your GPAT NIPER. So meanwhile, please let me know once. Am I audible? Sir, बीच बीच में ये बोलते जाइए. Audible है या नहीं? So these are the chapters which are very very important. Pre-formulation, tablet, capsule, suspension, emulsion, suppositories, aerosols, parenteral products, novel drug delivery system, right? And obviously cosmetics. So these are the important topics. So amongst these topics, what are the important points? So what are the important points from pre-formulation? So in pre-formulation, they are going to ask you question in like a bulk characterization. What is meant by density? What is meant by bulk density? What is tap density? What is pore density? How many number of tappings are there while calculating the tap density? They are going to ask you question from this part. How to how to measure the particle size distribution, etc. How to calculate the dissociation constant of drug. Most common method for dissociation constant. How to measure the partition coefficient of drug. What is meant by crystallinity and polymorphism. Which form of compound will be have more solubility, crystalline, amorphous. So such kind of questions they are going to ask you in a simple way. So in case of crystalline, you have systemic arrangement of particle in the crystal lattice. So it will have less energy. So will have less solubility. But in case of amorphous, amorphous form of compound will have random arrangement of particle in the crystal lattice. So it will have more energy and therefore more solubility. So obviously, so amorphous form of compound will have more solubility. बट जीपैट वाले क्या है कि वो थोड़े से शातिर होते हैं कि एक पहले एक आध बार क्वेश्चन पूछेंगे कि विच फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज मोर सोल्यूबल और आपको ऑप्शन में देंगे क्रिस्टलाइन एमरफस या फिर और कुछ ठीक है बट अभी क्या है कि वो थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे सो लाइक arrange the following forms of compound in their increasing order of solubility कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ऑप्शन में देंगे आपको क्रिस्टलाइन इज मोर सोल्यूबल देन amorphous is more soluble than metastable दूसरे ऑप्शन में देंगे शफलिंग करके कि amorphous is more soluble than metastable than crystalline so you have to remember that amorphous form of compound will have more solubility after that metastable and after that crystalline so crystalline has a least solubility amorphous has a highest solubility so you have to remember they will ask you constant dissolution test apparatus. Okay, they will ask you what is meant by Hausner's ratio, what is meant by Carr's index, what okay, they will ask you angle of repose. If angle of repose is less than 30, what type of powder flow is there? If angle of repose is 30 to 35, what type of powder flow is there? If angle of repose is more than 40, what type of powder flow is there? Okay. So such kind of questions they used to ask from pre-formulation. In that also you have stability analysis, what is meant by short term stability, what is meant by long term stability, what is intermediate term stability, what do you mean by accelerated stability, उसके conditions क्या है, what are the temperature conditions, what are the humidity conditions. So they used to ask question on these part. So in the pre-production those things are important. There are a lot of things I can take but we have time limitation. So in the tablet, so first of all classification of tablet. So you may ask sir what you are talking, classification is not important. Obviously they are going to ask you question for classification also. So types of tablet is very important. Okay, so they may ask you question like what do you mean by dispensing tablet, what do you mean by tablet triturate, what do you mean by hypodermic tablet. So hypodermic tablet वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया है. So in the Assam drug inspector exam जो था अभी उसमें एक क्वेश्चन आया था कि what do you mean by hypodermic tablets. Okay, so important होता है. So you have to remember, okay, classification of tablet. Then tablet diluents. Tablet diluents are very very important. कौन सा diluents? Tablet diluents are very very important. Directly compressible diluents, okay, super disintegrants, diluent, disintegrant, binder, okay, anti-adherent, उनका concentration. So these parts they are very very important. You have to remember this part.
They are going to ask you question from this part. Okay? Again, in the tablet, what is important? In the tablet, after that, granulation technique is important. What is dry granulation? What is wet granulation? What is the direct operation? Okay, so such kind of questions they used to ask frequently. So sludging, desludging occurs in which kind of granulation? They used to ask question. So sludging, desludging, that occurs in the dry granulation. You have to remember this. Okay, dry granulation में क्या आएगा? Sludging, desludging, right? Again, after the granulation, what comes? So tablet tooling. So both important part of the tablet tooling. Tablet tooling is very important part. Again, types of different tablet tooling. So what is meant by D tooling? What is B tooling? What is DB tooling? What is BB tooling? So इसमें से भी क्वेश्चन आता है आपको. Most commonly used tablet tooling. So that is nothing but the BB tooling, because in the BB tooling you will get a tablet around 400 450 milligram. Most of the tablet most of the dose उतना ही होता है ना. So BB tooling is the most commonly used. Again, you have to remember BB tooling is the smallest tooling. एक क्वेश्चन आया था, largest tablet can be obtained from which kind of tooling? So that is a D tooling. D tooling से सबसे ज्यादा बड़ा साइज का टेबलेट आपको मिलेगा. So D tooling is important, right? तो वही चीजें होती कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे. उसके बाद में आफ्टर द tablet tooling, tablet punching machine and its part. So you should know what is the role of your turret, what is the role of your cam handle, what is the role of your die cavity. So एक क्वेश्चन आया था, tablet size and shape is decided by following part of tableting machine. क्वेश्चन में आएगा आपको अपर पंच, लोअर पंच, compression force, die cavity. So remember tablet size and shape that is decided by die cavity. Die cavity में कैसा है, आपका die कैसा है, कॉन्केव है, कन्वेक्स है, ठीक है, कौन सा है, मतलब ओवल शेप है या फिर स्क्वायर शेप है. So depending on that, tablet size is going to be produced. तो जैसे आपका टैबलेट डाइस का कैविटी का साइज है, शेप है, उसके बेसिस पे ही आपका टैबलेट कैसे बनेगा वो डिसाइड होता है. ओके, ना कि अपर पंच, लोअर पंच, कंप्रेशन फोर्स. सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज द रोल ऑफ योर काम हैंडल. काम हैंडल का रोल क्या होता है? सो व्हाट इज इंजेक्शन कैम, व्हाट इज द इजेक्शन कैम, व्हाट इज द काम हैंडल? सो टू गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस, राइट? सो व्हाट इज टरेट? Turret is nothing but it is a part which holds the upper and lower punch together. Question आ चुका है उसके ऊपर, ठीक है. Turret means part of welding machine which holds upper punch and lower punch together. Okay, तो ये उसके बाद after the tablet punching machine and its part, you have to remember the tablet coating. Different types of tablet coating. तो कितने टाइप की कोटिंग होते हैं आपका? So there is a film coating of tablet, there is a sugar coating of tablet, there is a enteric coating of tablet. ठीक है. So in the sugar coating of tablet, sugar coating of tablet जो है उसके ऊपर कम से कम 5 या 6 बार क्वेश्चन आ चुका है. So what is the first step of sugar coating of tablet? What is second step? What is the purpose? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? सीलिंग. सेकंड क्या होता है? सब कोटिंग. थर्ड क्या होता है? सिरपिंग और स्मूथिंग और कलरिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या स्टेप होता है आपका? दैट इज द फिनिशिंग. लास्ट होता है पॉलिशिंग. तो हर एक स्टेप में उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिरपिंग? सो टू इम्पार्ट अ डिजायर्ड कलर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सब कोटिंग? टू इंक्रीज द बल्क ऑफ टेबलेट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ sealing, seal coating? So to prevent the moisture penetration in the tablet. So this was question in GPAT 2022. अभी जो लास्ट एग्जाम था उसमें एज इट इज क्वेश्चन था कि sealing is done in case of sugar coating of tablet. The purpose of seal coating is क्या है purpose? To prevent the moisture penetration in the core of tablet. ठीक है. तो आपको कुछ इस तरीके से ही पढ़ना है आपको. ठीक है. After that in the tablet what is important? So film coating, entry coating. So you have to remember what are the different film coating polymers. Okay? So every cellulose derivative is a film coating polymer. जितने भी सेलुलोज के डेरिवेटिव हैं सब क्या है? फिल्म कोटिंग पॉलीमर्स है. ठीक है. उसमें भी आपका मालूम होना चाहिए आपको कि कौन सा फिल्म कोटिंग पॉलीमर वाटर सोल्यूबल है, कौन सा वाटर इनसोल्यूबल. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर. In that
After that, there is a entry coding of tablet. Entry coding of tablet, right? So in the entry coding of tablet, you should know what do what are the different entry coding polymers. बहुत ही सिंपल होता है. There are only 4 entry coding polymers. देखो, एक पहला होता है आपका शेलेक. पहला होता है शेलेक, दूसरा होता है ZEIN, जेइन. तीसरा होता है आपका एक्राइलेट्स. ओके, यूड्राजिट यूड्राजिट. चौथा होता है आपका थैलेट, जैसे सेलुलोज एसिड थैलेट या फिर जितने भी थैलिक एसिड डेरिवेटिव, दे आर एंट्री कोडिंग पॉलीमर. ठीक है. So you have to remember the entry coating polymers, you have to remember the film coating polymers, you have to remember the sugar coating of tablet, the steps of sugar coating of tablet, the purpose. एक क्वेश्चन आया था, doubling of tablet weight that is possible in case of sugar coating of tablet, because in the second step of sugar coating of tablet sub coating जो होता है, so in that you have to apply a lot of sugar coat on the tablet. So in that condition what happens, bulkiness of tablet is increased, tablet weight is increased. तो आपका अगर tablet 100 मिलीग्राम का है, so अगर sugar coating के बाद में उसका तकरीबन 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 weight हो जाएगा 200 मिली. So doubling of weight is possible in case of sugar coating of tablet. तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके जीपीएट में. आफ्टर दैट इन द tablet evaluation test, जो tablet evaluation test होता है, what do you mean by hardness, what do you mean by apparently, what do you mean by descentralization, dissolution, content uniformity, weight variation. ठीक है. तो हर एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. each and every quality control test is very important. Lot of times they already ask question. एक सिंपल क्वेश्चन अगर पूछूंगा तो वो भी मालूम नहीं रहेगा बच्चों को, बहुत सारे. Okay. Simple question. How many tablets are taken for friability test? Simple question. How many tablets are taken for friability test? Comment box में आपका आंसर लिखो. How many tablets are taken for friability test? Simple test. ठीक है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं. आपका वेट वेरिएशन हो गया, friability, हार्डनेस, वेट वेरिएशन, friability, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन. ठीक है, वेट वेरिएशन, हर एक के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. हर एक के ऊपर प्रोबेबिलिटी, उसके लिमिट्स, प्रोबेबिलिटी उसके लिमिट्स, एपरेटस कौन सा यूज करते हैं, कितने इंच आपका टैबलेट ड्रॉप होता है ड्यूरिंग द प्रोबेबिलिटी. नो, रवि जोशी उन्होंने कमेंट किया 20 टैबलेट. तो वही तो दिक्कत है ना, ये एक्चुअली इट डिपेंड्स हाउ मेनी टैबलेट्स यू हैव टू टेक पर प्रोबेबिलिटी. इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ टैबलेट. आपके टैबलेट का वेट कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि कितना टैबलेट लेना है. ठीक है. सपोज if your tablet weight is a less than 650 मिलीग्राम, आपका टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम से कम है, तो कितना टैबलेट लेना है आपको. so if your tablet weight is a less than 650 milligram, then you have to take tablet weight corresponding to 6.5 gram. 6.5 ग्राम का टैबलेट वेट करो, उसमें कितना टैबलेट आता है डजंट मैटर. 6.5 ग्राम इतना वेट आएगा, उतना टैबलेट वेट करना है आपको. उसमें 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है. if your tablet is 20 milligram, बहुत सारे टैबलेट आएंगे उसमें. okay, so if your tablet weight is less than 650 milligram, then you have to take weight corresponding to 6.5 gram. if your tablet weight is a 650 milligram or more, अगर 650 मिलीग्राम है या फिर उससे ज्यादा है, so you have to take 10 tablets. so that depends. ठीक है. तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा था, सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. बाकी बाकी बहुत सारी चीजें होती है, लिमिट क्या है, कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, कितना आरपीएम होता है, वो तो आपको टेस्ट सीरीज कहीं पे दिखा होगा, आपने वो माना होगा. बट मेरा कैसा है, मैं गूगली डालता हूँ, तो पहला क्वेश्चन जो था वो गूगली था. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डिपेंड्स ऑन द वेट. जैसे और एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस टेस्टर except Monsanto and Pfizer. Name the different types of hardness tester except Monsanto and Pfizer. Type in a comment box. ठीक है. ठीक है. हार्डनेस मतलब क्या है, हार्डनेस के ऊपर 2-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर हार्डनेस मींस व्हाट. हार्डनेस टेस्ट इज आल्सो नोन एज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट. हार्डनेस is known as the crushing strength of tablet. So after tablet making, after the compression of tablet, your tablet need a certain strength. Your tablet need a certain mechanical strength to withstand with the
storage, handling, and all that. So for that, a tablet should have hardness, proper hardness. So that is tested by different hardness tester. वो टेस्टर कितने हैं? Monsanto, Pfizer, शेरेगुलर टेस्टर, स्टॉक एंड कॉप, यूरेका टेस्टर, बहुत सारे होते हैं. So हर एक टेस्टर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So what is the mechanism of यूरेका tester? What is the mechanism of शेरेगुलर tester? Weight variation test. Limits मालूम होना चाहिए. If tablet weight is okay as per IP and British Pharm, limits are different. As per USP, limit are different. So if tablet weight is 80 or 80 milligram or less than 80, so percentage weight deviation is nothing but the it is a it is a 10%. Okay, so if tablet weight is a less than 80 milligram as per IP, 10%. If tablet weight is 80 mg or up to 250 mg, so weight percentage deviation is around 7.5%. If tablet weight is a 300 milligram or more, then only 5% as per IPPB. वही लिमिट्स तो वही है, सिर्फ आपका टैबलेट का वेट चेंज करना है एज पर यूएसपी. So as per USP, if tablet weight is 133 mg, then percentage deviation is 5%. Okay, if tablet weight is 133 to 324 as per the USP, then percentage deviation allotted is a 5%. If tablet weight is a more than 350, so tablet weight अगर उससे ज्यादा है तो only 5% deviation is allotted. So जितना ज्यादा tablet का weight उतना ज्यादा deviation कम रहेगा. वो जितना कम tablet का weight रहता है उतना ज्यादा deviation रहता है. So weight variation test, content uniformity, dissolution, types of dissolution test आपको मालूम ही होना चाहिए. So हर एक चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी कोई पॉलीमॉर्फिज्म है, जहां पे भी कोई मशीन है, हर एक हर एक मशीन का यूज जैसे होता है कैप्सूल में. व्हाट इज यूज ऑफ एक्कोफिल, व्हाट इज यूज ऑफ रोटोफिल, व्हाट इज यूज ऑफ रोटोसॉर्ट, व्हाट इज यूज ऑफ वेरिगैप 1200. तो हर एक कैप्सूल मेकिंग मशीन उसका यूज मालूम होना चाहिए. व्हाट डू मीन बाय टाइप ए जेलेटिन, टाइप बी जेलेटिन. टैबलेट में टैबलेट डिबेट, व्हाट डू मीन बाय कैपिंग, लैमिनेशन. ओके, कैपिंग, लैमिनेशन, वेट, कैपिंग, लैमिनेशन, मॉडलिंग. What do you mean by sticking, picking? Okay, what do you mean by chipping? What are the reasons for capping? What are the reasons for modeling? What are the reasons for chipping, etc., etc. Remedy क्या है? वो that part is important. उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है. Then super disintegrant, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. कैप्सूल में टाइप्स ऑफ जेलेटिन, टाइप ए जेलेटिन, टाइप बी जेलेटिन, उसका आइसोलेटेड पीएच. What do you mean by bloom strength? Okay, how bloom strength is carried out? What is the iron content limit for the capsule? Okay, source of types of gelatin, source and gelatin. Okay? Capsule filling machines, that is important. Again, what is the destination time limit for hard gelatin capsule? Bolo, what is the destination time limit for hard gelatin capsule? You have to comment in the comment box. What is the limit for what is the limit for disintegration for soft gelatin capsule? Which plasticizers they are used in the soft gelatin capsule? तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे. ठीक है, so you have to remember suspending agents, emulsifying agent, instability of emulsions. Instability कितना है emulsion की? So what is meant by creaming, what is meant by cracking, what is meant by phase inversion? Phase inversion कब होगा उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. So remember, when there is a internal phase volume will exceed 65 to 75%. So in that time phase inversion will be there. Cracking, creaming, phase inversion, okay, coalescence, flocculation. So out of that you have to remember the which instability is a reversible. तो रिवर्सिबल कौन सा है इमल्शन में इंस्टेबिलिटी? तो क्रीमिंग आपका रिवर्सिबल होता है क्या, फ्लॉकुलेशन होता है क्या, कोएलेसेंस? सो रिमेंबर, क्रीमिंग and flocculation are reversible, rest of the irreversible. Suppository में आपको you have to remember the aerosol. As in the suppository you have to remember the types of suppository bases, polymorphism, advantage, disadvantage. So कुछ में से क्वेश्चन suppository में से 2-3 क्वेश्चन frequently asked किए. So what are these questions? So first question, a suppository made from a following base will look like a transparent, translucent. ऑप्शन ए में रहेगा आपका कोका बटर, ऑप्शन बी में रहेगा
ग्लिसरोजिल्टीन, ऑप्शन सी में रहेगा मैक्रोगॉल, ऑप्शन डी में रहेगा ऑल ऑफ देम. Okay, so you have to remember. So suppose it is made from a your glycerogelatin base, it will look like a transparent, translucent, jelly-like consistency. Okay, then displacement value के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है suppose it means. उसका कोका वाटर का पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा फॉर्म स्टेबल है कौन सा नहीं है क्वेश्चन उसके ऊपर आता है. एरोजोल्स, टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट्स. ओके, टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स, ये जैसे होता है क्वेश्चन आ चुका है. मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोपेलेंट फॉर टॉपिकल एरोजोल फॉर्मुलेशन, तो कौन सा होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स. सो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, दैट इज अ टॉपिकली यूज्ड. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं दे आर यूज्ड फॉर सिस्टमिक और दे आर यूज्ड फॉर इनहेलेशन एरोजोल्स. उसमें एक फॉर्मूला होता है. सो व्हाट डू मीन बाय हाउ टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्लोरोकार्बन. सीएफसी के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है वहां पे होता है सी एन प्लस वन एच एन माइनस वन है प्लस एफ. ठीक है, तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन और एरोजोल. एरोजोल के नंबर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोजोल. ठीक है, एरोजोल कंटेनर एंड इट्स पार्ट, इसके ऊपर कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा है. इन केस ऑफ एरोजोल डीप ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन. इन केस ऑफ एरोजोल गास्केट इज मेड फ्रॉम पुना एंड रबर. ठीक है, इन केस ऑफ एरोजोल कंटेनर्स शुड विथस्टैंड विद हाई प्रेशर, कितना होना चाहिए 180 psi. सो उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. ओके, पेरेंटल पेरेंटल अगेन उसके बाद में एरोजोल्स का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, व्हाट इज मीन बाय फ्लेम प्रोजेक्शन टेस्ट, व्हाट इज मीन बाय कंबशन टेस्ट. ठीक है, टैग ओपन का पैपेटस किस में यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेलेंट्स बाय गैस क्रोमेटोग्राफी. बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है, सो इन दैट यू हैव टू रीड इन दिस मैनर. सो इन द पैरेंटल प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ वाटर्स, व्हाट डू यू मीन बाय water for injection, what do you mean by sterile water for injection, what do you mean by sterile water for inhalation, what do you mean by sterile water for irrigation. So you have to remember the specifications as per USP monographs per waters. ये उसका लिमिट एंडोटॉक्सिन लिमिट क्या है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी आ चुका है. सो वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर्ड बाय, उसका मेथड कौन सा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस and distillation. Distillation and reverse osmosis, that is the process. right? उसका लिमिट पीएच कितना होना चाहिए, कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए. ठीक है, हर एक के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कॉस्मेटिक्स में आपको बस इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, कलरेंट कौन सा है, एंटीऑक्सीडेंट कौन सा यूज किया, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, so they are going to ask you 15 questions from industrial pharmacy. And next subject रहेगा आपका in the statistics, that is a pharmaceutical engineering or unit operations. So what is important from this? So size reduction, size separation, drying, evaporation, crystallization, material construction, humidification, dehumidification, flow of fluid. So these chapters are very very important. So they are going to ask you at least 4 questions from this pharmaceutical engineering. So questions कहाँ से रहेंगे, so जो भी थियरी पार्ट होता है, अभी पूरा के पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, बट वी डोंट हैव इनफ टाइम नाउ. सो ईच एंड एवरी चैप्टर, द थियरी पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. सो व्हाट इज द थियरी ऑफ साइज रिडक्शन, व्हाट इज किक्स theory, what is Retignol's theory, what is Bond's theory. Then meals, different meals and their product size obtained, different meals and their variants. जैसे क्वेश्चन आ चुका है GPAT 2019, variant of ball mill. What is the variant of ball mill? So hand range mill. Hand range mill is a variant of ball mill. उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What is the variant of cutter mill? What is the variant of fluid energy mill? Mechanism क्या है उसका. ठीक है. So remember vertical impact polarizer, that is a variant of fluid energy mill. Okay. Then what is the variant of cutter mill? Single runner disc mill, double runner disc mill. They are the variant of
कटर में, ठीक है। अगेन, व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट साइज ऑफ टेंडर, ठीक है। बहुत सारे साइज सेपरेशन में टाइप्स ऑफ पाउडर, व्हाट इज मीन बाय कोर्स पाउडर, व्हाट इज मीन बाय moderately coarse powder, what is mean by fine powder, what is mean by very fine powder, what is mean by super fine powder, what is mean by ultra fine powder, what is mean by micro fine powder। तो इतने सारे फाइन पाउडर आपके अपने जिंदगी में नहीं देखे, क्वेश्चन आते हैं लेकिन, ठीक है। क्वेश्चन आता है जैसे व्हाट इज मीन बाय फाइन पाउडर, सो इफ 90% ऑफ पार्टिकल passes through sieve number 85, that is known sieve number 85, that is known as fine powder। Very fine powder, if particles passes through sieve number 120, okay। Very fine powder, if particle passes through sieve number 350, very fine। What is mean by micro fine powder, if powders particles are able to pass through sieve number 10 micron, that is known as a micro fine powder। What is mean by ultra fine powder, if all particles of powder is able to pass through sieve number 5 micron, that is known as ultra fine powder। क्वेश्चन सबके ऊपर आ चुके हैं, कोर्स पाउडर, मॉडरेटली कोर्स, फाइन पाउडर, डिफरेंट मेथड फॉर साइज सेपरेशन, उनकी सिनोनिम्स, जैसे साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज, साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज, आपको कमेंट में टाइप करना है साइज रिडक्शन को क्या बोलते हैं, व्हाट आर द सिनोनिम्स फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन, डिमिनिशन, पोलराइजेशन। क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रायर्स, बैच ड्रायर, कंटिन्यूअस ड्रायर, ड्राइंग मैकेनिज्म, ठीक है। उसमें हाइग्रोस्कोपिसिटी, उसमें आता है आपका डेलिक्वेसेंसी, हाइग्रोस्कोपिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। एज पर द यूरोपियन टेक्निकल गाइड्स ऑन हाइग्रोस्कोपिसिटी, पाउडर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, वेरी हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेशन। तो उसका मेथड क्या है वो सब मेरे बुक में दिया है, आपको बहुत सारे बुक्स में मिले, बट यू हैव टू रिमेंबर, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। So distillation, evaporation, laws important, Dalton's law, Boyle's law, Charles law, ये सब important laws, volatility, types of distillation कितने होते हैं, steam distillation, molecular distillation, ठीक है, destructive distillation, उसके बाद में आपका fractional distillation, azeotropic distillation, हर एक टाइप का distillation important है। जैसे क्वेश्चन आया था, absolute alcohol is prepared by, absolute alcohol is prepared by azeotropic distillation। solvents are purified by, solvent कैसे प्यूरिफाई करेंगे, by using fractional distillation। तो हर एक का ऊपर फ्लो ऑफ फ्लूइड, जैसे उसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द apparatus used for measurement of pressure differential, एक क्वेश्चन आ चुका है ये बाय 2020 में, तो उसका आंसर है मैनोमीटर। मैनोमीटर्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंशियल। if flow, if Reynolds number of fluid is less than 2000, what type of flow is there? If Reynolds numbers of fluid is more than 4000, what type of flow is there? Okay. So what is turbulent flow, what is streamline flow, what is the laminar flow, question आता है। So if Reynolds number is of fluid is less than 2000, so type of flow is a laminar flow। Okay, if Reynolds number is more than 4000, type of flow is a turbulent flow। if it is in between that two, so changing from laminar to turbulent। ये बहुत सारा है ऐसा, एक पूरा दिन जा सकता है एक ही सब्जेक्ट पे ऊपर, पूरा दिन बात करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। देन क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, ये मियर्स थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन, वी हैव टू रिमेंबर मियर्स थ्योरी ऑफ सुपर सैचुरेशन। क्रिस्टल शेप्स, क्रिस्टल शेप्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। जीपीएट 2021 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द क्रिस्टल शेप ऑफ सल्फर सिटामाइड, ऑर्थोरोपी। तो हर एक आपको एक चार्ट मिलेगा बुक में, यू हैव टू रीड फ्रॉम दिस बुक। ओके, मटेरियल कंस्ट्रक्शन, मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आपका आएगा टाइप्स ऑफ स्टील, टाइप्स ऑफ आयरन, टाइप्स ऑफ रबर, टाइप्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास, व्हाट इज टाइप 1 ग्लास, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1। तो टाइप 1 इज नोन एज अ बोरोसिलिकेट ग्लास, टाइप 2 इज नोन एज अ treated soda lime glass, type 3 is known as a soda lime glass, type 4 is known as a general purpose soda lime glass। हर एक का टाइप, उसका यूज, उसमें कितना अल्कली लीच होता है, surface alkali of glass is neutralized by सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे मतलब
अगर मेरा दिन भर का एक सेशन किसने किया कर लिया ना, तो उसको जीपैट उसी टाइम पे क्वालिफाई करना है, बाकी उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको लिख के देना है पॉइंट्स, तो उतना ही पढ़ना है, उसमें क्वालिफाई हो जाएगा उसका। डिपेंड करता है ना। They are going to ask you at least 4 questions from this pharmaceutical engineering. Now next आता है आपका physical pharmacy. They are going to ask you around 7 questions or 8 questions from physical pharmacy. So these are the chapters which are important: state of matter, rheology, micromatics, thermodynamics, chemical kinetics, phase rule, colloids, surface tension, interfacial phenomena. So out of that, micromatics, rheology is very very important. Lot of times they use, yeah, lot of times they used to ask question from this chapter. So what is meant by Newtonian flow? What is meant by plastic flow? What is plastic flow? What is dilatancy? What is rheopexy? What is the negative thixotropy? What do you mean by spur, bulges, etc. etc. तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा फ्लो कौन सा मटेरियल दिखाता है। न्यूटोनियन फ्लो मोस्ट ऑफ द वाटर सॉल्वेंट्स अल्कोहल वगैरह। नॉन न्यूटोनियन फ्लो में आता है प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो इज नोन एज द बिंगम बॉडीज। ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल विल शो प्लास्टिक फ्लो? जैसे आपका फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है, दैट विल शो डीफ्लोकुलेट, विल शो प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक कौन दिखाएगा? पॉलीमरीना सॉल्यूशन जैसे अक्षय सॉल्यूशन, ट्राइकान सॉल्यूशन, जेल्टिन सॉल्यूशन, कार्बोक्सिलिक सेलुलोज सॉल्यूशन, दैट विल शो प्लास्टिक फ्लो। डायलेटनेसी क्या होता है? डायलेटन फ्लो, सो कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन कंटेनिंग मोर देन 50% सॉलिड, डायलेटन फ्लो दिखाएगा। रियोपेक्सी नेगेटिव थ्योसॉफी, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पार्टिकल साइज मेजरमेंट, हाउ यू कैन मेजर द पार्टिकल साइज, पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल वॉल्यूम, टाइप्स ऑफ डायमीटर, their diameter, margin diameter, projected area diameter, different types of diameter, micromatics में पाउडर्स, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, हॉसनेस रेशियो इसमें आता है, कार्स इंडेक्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। Then thermodynamics, first order, second order, third order. Chemical kinetics, phase rule. उसमें क्या होता है कि phase rule में what is a triple point of water? What is a triple point of water? क्वेश्चन आ चुका है। कंडीशंस क्या है? कोलाइड्स में लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, ठीक है। गोल्ड नंबर्स, एयर व्यू थ्योरी, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स, एसोसिएशन कोलाइड, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। Surface tension interfacial phenomena, again important chapter. So in that HLP values of surfactants, OW is LW is, है ना। उसमें टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक, उसका एग्जांपल्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एनायनिक कैटायन? एनायनिक सरफेक्टेंट, सोडियम लाउरिल सल्फेट इज एनायनिक कैटायन, एनायनिक सरफेक्ट, ठीक है। कैटायनिक सरफेक्टेंट कौन है? सेट्रीमाइड, बेंजोल्फिनियम क्लोराइड, दैट इज कैटायनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयनिक कौन है? ओलिक एसिड, नॉन आयनिक, है ना। तो एग्जांपल मालूम होना चाहिए, गोल्ड गोल्ड नंबर्स मालूम होना चाहिए कोलाइड्स में, डीएलयू थ्योरी मालूम होना चाहिए, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ, ये सब भी है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सीएमसी, क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। सीएमसी के अबाव सोलिडिटी क्या होगा, नीचे सोलिडिटी क्या होगा? What is CMC? Critical micellar concentration. The concentration of surfactant at which there is a formation of micelle, known as a critical micellar concentration. तो CMC के above solubility क्या होगा? बढ़ जाएगा। CMC के नीचे solubility क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। Okay, so they are going to ask you at least 7 questions from this. You have to read from this book और मार्टिन। एक तो इस एक तो इसमें से पढ़ सकते हो या फिर मार्टिन में से पढ़ सकते हो, ठीक है। We have a lot of things. They are going to ask you 2 questions from this part. So posology, child dose calculation, alcohol dilution, metric system incompatibility, Latin terms are important. You have to read from these 2 books. Okay? Because अगर एक सेक्शन भी आज नहीं किया तो फिर इससे ही आपके बहुत सारे पार्ट हो रहेंगे, ठीक है। So they are going to ask you at least 4 questions from biopharmaceutics. So ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination,
तो इस बुक में से जितने भी चार्ट्स है, टेबल्स है, वो कर लो, कम से कम 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाए। इन विट्रो, इन विवो कोरिलेशन, बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्वल स्टडीज आर इम्पोर्टेंट। जैसे फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोलॉजी दे आर गोइंग टू आस्क यू 10 सॉरी 28 क्वेश्चन, so everything is important from pharmacology. For general chapters, classification, mechanism, adverse effect, indications, contraindications, toxicity, antidote, ADME, absorption, distribution, metabolism, inhibition, that is important. Okay, from general pharmacology, lot of things are important. Okay? Say आपका route of administration, absorption process, distribution process, metabolism, elimination, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। So metabolism, what are the type, what are the phase first metabolic reaction, phase second metabolic reaction, oxidation, reduction, hydrolysis, phase one। उसके बाद में ग्लूकोइनोनेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन, दे आर द फेज सेकंड। तो क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन फेज वन कौन है, मोस्ट कॉमन फेज टू कौन है। लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, द मोस्ट कॉमन phase one metabolic reaction is oxidation, most common phase second metabolic reaction is glucoronate conjugation। क्वेश्चन आता है आपको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज रिलेटेड विद फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसका आएगा आपका एस्टाइलेशन, क्योंकि एस्टाइलेशन क्या है कि उसमें स्लो एस्टाइलेटर्स होते हैं, फास्ट एस्टाइलेटर्स होते हैं। ओके, उसमें डिटेल में आपको मेरा यूट्यूब पे वीडियोस है, वो सारे देख लो। टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, A, B, C, D। What is type A adverse drug reaction? Type B, type C, type D, type E। उसके ऊपर भी एक वीडियो मेरा, वो जाके देखो। ठीक है। Types of receptors. What is type 1 receptor? Ion channels. Type B, type second metabotropic, GPCR। उसके ऊपर भी एक वीडियो है, वो भी जाके देख सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें फार्माकोलॉजी में, lot of things are there, they are going to be asked, lot of things are there, that can be asked। So 28 क्वेश्चन आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, उसमें कम से कम 5 या 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एंटी इपिलेप्टिक, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एंजाइटी, बहुत सारे, इतना पूरा सिलेबस मुझे याद है। ठीक है, आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर एंटी साइकोटिक चलो किया तो वो पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। So that depends. So they are going to ask you 28 questions, or you have to read in this manner। क्या क्या important है वही पढ़ो। ठीक है, so we'll finish this section at least। So from anatomy physiology, these are important: blood, cardiovascular system, respiratory, nervous, skeletal, digestive, endocrine, excretory, reproductive system। Every year they used to ask one question from your nervous system, digestive system and skeletal system। और ब्लड में तो मतलब उनका फेवरेट चैप्टर होता है ब्लड। तो जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो हर बार क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज फैक्टर नंबर 1? fibrinogen, factor number 2 prothrombin, factor number 3 tissue factor, factor number 4 calcium, factor number 5 labile factor, factor number 6 होता नहीं, factor number 7, factor number 8, factor number 8 क्या होता है कि एंटी इम्यूनोफिलिक फैक्टर ए। फैक्टर नंबर 9 क्वेश्चन आ चुका है, फैक्टर नंबर 8 जीपैट 2021। फैक्टर नंबर 4 क्वेश्चन आ चुका है, फैक्टर नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, फैक्टर नंबर 1 के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। मतलब एक टेबल है आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। उस टेबल के ऊपर कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी कैसे करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कैसे आप how you can get all India rank 1 just by doing self study। there is no need to waste your 20,000 rupees। आपको उल्लू बना रहे लोग कि ज्वाइन करो क्लासेस। अरे भाई क्यों नहीं करना है, आप खुद से पढ़ो, खुद का स्टडी करो, खुद का नॉलेज इंक्रीज करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प। आपको रेडीमेड देंगे तो यूजफुल नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल खाने से आपको विटामिन मिलेगा, तो वो विटामिन आपकी बॉडी को लगेगा। अगर आप सिर्फ विटामिन का टैबलेट ही लोगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, सो रेडीमेड दे आर नॉट यूजफुल, सो यू हैव टू डू दैट। आपको खुद से करना पड़ेगा, जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है,
So a lot of questions they used to ask from this. So you can expect at least 4 or 5 questions from HP. Anatomy, physiology, you have to read from this book. Okay? Biochemistry, कम से कम पांच या छह क्वेश्चंस बायोकेमिस्ट्री. You have to cover from Satyanarayana. Biochemistry by Satyanarayana. So carbohydrate, proteins, lipids, amino acids, vitamins, biomolecules, their metabolism. हर एक का मेटाबॉलिज्म उसमें अगर कोई आइसोमर्स है, व्हाट इज मीन बाय एनोमर्स, व्हाट इज मीन बाय टाउटोमर्स, व्हाट इज मीन बाय इपीमर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, किसमें किस टाइप का बॉन्ड है. ठीक है, इसका जो कार्बोहाइड्रेट में एक चार्ट मिलेगा आपको. Identification test. How you can distinguish between reducing sugar, non-reducing sugar. How you can distinguish between aldoses, ketones. क्वेश्चन आ चुके हैं इसको 100% आ चुके. आप पेपर देख लो. मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस, रिवर्सिबल स्टेप, इरिवर्सिबल स्टेप, एनर्जेटिक्स, क्वेश्चन उसके ऊपर आ चुके. ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए अमीनो एसिड. कौन से सल्फर कंटेनिंग है, कौन से एरोमेटिक अमीनो एसिड है, कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है. What are the essential fatty acids? What do you mean by unsaturated fatty acid? What is linoleic acid? Linoleic acid, hyaluronic acid. विटामिन्स, विटामिन्स में कौन से विटामिन का क्या बायोकेमिकल रोल है. विटामिन्स, their structure, structural aspects, biochemical role, deficiency syndrome, and these things are important. Enzymes, again, very very important. So you can expect at least 6 to 7 questions from biochemistry. तो 6-7 क्वेश्चन आपको 100% आता है बायोकेमिस्ट्री में से. जैसे आपका डीएनए, आरएनए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. ठीक है, क्वेश्चन आते ही आते. ठीक है, एंजाइम्स, काइनेटिक्स, क्वेश्चन आता है. व्हाट इज मीन बाय माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, व्हाट इज मीन बाय लीनियर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, क्वेश्चन आ चुके. सो lot of things are important. So if anybody has doubt, they can ask. We'll continue this session for next Sunday also. So remaining part will take on next Sunday. So अगर किसी को doubt है पूछो. If anybody is having any question, write down in the comment box. Just write down your question in the comment box. We are having last 10 minutes. Am I audible to all of you? Yes, anyone is having any question? Because GPAT has a very vast syllabus, and you cannot take a GPAT session in a 1 hour. I know a lot of people they used to take in a 45 minutes, but I don't know how they could able to finish in a 1 hour. इवन पूरा साल भी जीपैट के लिए कम है. ठीक है, एक 1 आवर्स में सेशन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं. क्या बोलेंगे आप 1 आवर में. ठीक है, सो हर एक सब्जेक्ट है, हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर के ऊपर आपके क्वेश्चंस कौन से आए वो भी डिस्कस कर सकता हूँ. हर एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए. There is a question by Kavya Patil. List of book names for every subject. Yes, it is available. You just WhatsApp me on my number 9766654377. I will send you the PDF. मेरे पास PDF है. हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन से रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो. उसके उसमें से सब कुछ यूज नहीं करना है. एक या दो बुक यूज किए, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है, जैसे फार्माकोलॉजी के मैं आई कैन एनलिस्ट मोर देन 10 बुक्स. फार्माकोलॉजी के लिए 10 बुक में लिस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सभी यूज करने का नहीं. आप कौन से भी तो यूज करो उसमें से, दैट इज इनफ. So if you want that subject wise reference book recommended, you just WhatsApp me. I will send you the PDF. I will send my number on comment box. You just so type your WhatsApp number in the comment box. Same number you can use for contacting sir.
any query you want regarding the course take by sir? Anyone else want to ask any question? Still, we are having last 5 minutes. Yes. 976654377. I have given. Uh, then, can you repeat 97 9766654377. 666 54377? 97 666 54377. So I have typed the number in the comment box. You can contact Sachin sir. Anyone else want to ask any question regarding the preparation last 30 days strategy? बस लास्ट 30 days में आपको करना क्या है? Yes. सब please allow me to share the screen. Yeah. So last 30 days, how you can crack the GPAT in last 30 days. Okay, or if you are not studied properly, it doesn't matter. Just do these things. What are these things? So first, these are the 14 golden points that you have to focus on. आपको सिर्फ इतना ही करना है क्या? So पहला point, जो charts, tables, summary, definitions, laws, MCQs है given in these two books. ये बुक में से जितने भी चार्ट्स टेबल्स है, समरी है, डेफिनेशंस, लॉज, एमसीक्यूज है, वो कर लो. एटलीस्ट it can cover at least your 5 to 6 questions. Same thing you have to do from these two books. It will cover at least your 10 questions. Same thing you have to do from this book. At least 3 or 4 questions will be covered. Okay. Same thing you have to do from this. So basically chemistry में ज़्यादा tables and charts नहीं होते. So at least you have to read these points. Reaction intermediates, their stability, SN1 reaction, SN2 reaction, E1, E2. Huckel's rule for aromaticity. बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. Rearrangement reaction जितने भी उतने ही करो. जनरल रिएक्शन सुबल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वो करो. इसमें से कम जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है उतना कर लिया. कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है. Same thing, charts, table, summary, definition. You have to read from these two books. It will cover at least 4 questions. ठीक है. अगर इतना भी किया तो आपका 4 क्वेश्चन कवर हो जाए. You have to read same thing from these two books. कम से कम 6-7 questions will be covered. Okay. Charts, table, summary again from these two books. It will cover at least 2 or 3 questions. Chart, table, summary from these two books. It will cover at least 10 questions. Same thing you have to do from these two books. It will cover at least your 5 questions. तो 50% सिलेबस जीपेट का आपका सिर्फ चार्ट्स टेबल पढ़ के ही हो सकता है. चार्ट्स टेबल समरी एमसीक्यूज गिवन इन दीस टू बुक्स. इट विल कवर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस. जो क्वालिटी एश्योरेंस है, गाइडलाइंस, ओएसटी गाइडलाइंस, अप एंड डाउन प्रोसीजर, ओरल टॉक्सिसिटी, ठीक है, क्वालिटी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, सब कुछ दिया है इस बुक में. एज इट इज दिया है, चार्ट्स लेवल पढ़ लो. चार्ट्स टेबल्स भी के जूरिस्प्रूडेंस में से 2 या 3 बुक में से आपके कम से कम 3 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे. प्रीवियस के 5 ईयर के पेपर को जीपैट के पेपर प्रीवियस 5 इयर्स पेपर. सो इट कैन कवर एटलीस्ट 15 एमसीक्यूज. एंड अगर कुछ नहीं करना है आपको, सो ये बुक में से को सब कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है. if you don't want to read charts table, just read this book. That is enough. Okay.
Anybody else? Anything else? Yeah, anyone Kiसी को else want to ask the question or specific topic on which you want the next sessions? remaining sections, that is nothing but the chemistry section is remaining, cognosy is remaining, other subjects are remaining. So we'll cover in the next session. Yeah, you will be knowing that for pharmaceutics, you can just understand the things just reading the books. Pharmacognosy, even you can read the book and you can get so many things. Pharmacology, anatomy, that is little bit easy. But chemistry need some guidance. So Because that your GPAT rank depends on the chemistry, that's it. yeah, and one important sentence I'm totally agree with Sachin sir that okay, yeah, qualification is not important, but you want to get rank first within first 10, within first 50, within first 100, or within first 5, then this chemistry subject that will decide your rank. What that makes the difference, because what is the thing, the other subjects you can say they are totally depending on your memory, but chemistry depends on your understanding, your logic. So that will differentiate you from others. So remaining sessions are very important, and also ask your colleagues to attend this session, because these sessions we are conducting only for your benefit. So with this, I'm ending the session, and I'm again thankful to Sachin Jadhav sir. Thank you very much, sir. It's exactly 11 o'clock, and we'll be ending the session. So we'll be meeting in the next session. The information I will again pass on to you. So specifically, it will be on organic chemistry, and another subject, sir. Chemistry section, whole chemistry section, then important topics under chemistry, important points under each topic, then important points under the cognosy, important topics under cognosy, important points under cognosy, important points under jurisprudence topics, etc. etc. So our Other topic will subjects. be GPAT 2023, how to study, or more emphasis on organic chemistry, how to study organic chemistry. So we'll be covering in the next session. So thank you again, Sachin sir, for these wonderful sessions and previous 3 sessions. If anyone want to go through the previous session, this session, it is available on your YouTube channel, and also for any details of the course, sir is having ready-made charts, notes, what the books into you. But within these 30 days, it is difficult to prepare out these charts and go through. So the same thing is done by the expert person, ready-made thing. So you can go through that one in last 30 days. So again, sir is, and I also share the contact detail of sir. Definitely, we will be in touch with you, sir. Okay. So thank you. With the permission of sir, I'm closing the session. Thank you, sir. Actually, my health is not good. I'm not feeling well, but still, I have to do that. Yesterday Take also care, I sir. was there. Yesterday also I had taken 6 hours session. Oh, great. Thank you. Thank you. Okay, sir. Thank you, everybody. Yes. Take care. Yes. Thank you, sir.